Hello students, today we will start chapter number 4, motion in a plane. Okay, so our first topic is need for vector. Why vector is needed? What is the use of vector? So in chapter number 3 we already learned in a motion in a straight line. Motion in a straight line, or you can say motion in one dimension. There is only two directions are possible, either positive or negative. So while dealing with motion in a straight line, okay, all the quantities, you can say major quantities are either positive और नेगेटिव. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो सिर्फ ओवरऑल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल थी, एक थी पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरी थी नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? उसके लिए अगर हम लोग मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करें, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है, या मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, मतलब मोशन इन अ स्पेस. ओके, सो इन दैट वी कैन से क्वांटिटीज हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस. क्वांटिटीज की डायरेक्शन बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन स्पेसिफाइड करने के लिए एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. जिसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. सो लेट्स सी नीड फॉर वेक्टर, कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, सो वी कैन से फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन, फॉर वन डायमेंशनल मोशन we can say on a straight line, motion in a straight line, there is only two possible directions, only two possible directions. Okay, but we can say, so for a directional aspects, quantities like displacement, position, velocity, acceleration, etc. These quantities are either positive or negative, और नेगेटिव. ये क्वांटिटीज है, या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है. बट वी कैन से while dealing with motion in a two dimensions, like a motion in plane, or in three dimensions, like motion in what? Space. Okay, these quantities have large number of these quantities like a velocity, acceleration, displacement have large number of possible directions. So these quantities have large number of possible directions. Okay, so here we can see whenever we are deals with two dimensional motion or three dimensional motion, large number of possible directions. So to overcome such a difficulty, to overcome such a situation, we introduce one new physical quantity, which is a vector quantity. It is a type of classification of our physical quantities in two types. One is vector and the second one is a scalar. Okay, which will be see in our next theory. So overall we can say, in such situation it is easier to introduce a physical quantity, a new physical quantity, which is a vector quantity. So in such situation we introduce new physical quantity, or you can say it is a classified, or you can say one type of physical quantity, okay, called vector quantities, to
to specify directions and magnitude. To specify what? Directions as well as magnitude. Okay, now in our next theory we will see the classification of physical quantities in vector and scalar. What is the difference between vector and scalar? Okay.